All right. The Delhi drums have fallen silent. The next 2 days, viewers, is going to be intense amount of politicking. The campaign might have ended, but the politics now to get the voters out to vote has begun. In the triangular contest for the national capital between BJP, Congress, Aam Aadmi Party, the three parties made a final push today to woo voters. Will Arvind Kejriwal take oath for the fourth time in Delhi? Can Congress dent Aam Aadmi's vote share? Can the BJP script a comeback after 26 years? Here's the full report. The last and final lap in the capital clash. The BJP, Aam Aadmi and Congress, big guns boomed in a final push to woo Delhi voters on Monday as campaigning ended. Home Minister Amit Shah hit the campaign trail, taking aim at the Aam Aadmi Party's governance model, accusing them of betraying Delhi. जय जय श्री राम। भाइयों बहनों 10 साल तक अनेक वादा कर केजरीवाल और इनके चट्टे पट्टों ने दिल्ली को क्या दिया? भ्रष्टाचार दिया। ये दिल्ली को धोखा देने का काम केजरीवाल जी और उनके चट्टो पट्टों ने करा है। The BJP's top ministers and leaders also hit the streets in a bid to script a comeback in the capital. जनता की आंखों में धूल झोंकना यह उनकी बड़ी पुरानी आदत है, उनकी यह फितरत है और इस फितरत को दिल्ली की जनता अब अच्छी तरह समझ चुके हैं। दिल्ली वासियों ने आम आदमी पार्टी की भ्रष्टाचार, विफलताएं और खुद के लिए सुख सुविधाएं खुद मुख्यमंत्री निवास एक मिसाल के रूप में दिल्ली वासियों के सामने है। Foreign Affairs Minister S. Jaishankar attacked the Aam Aadmi Party, claiming he's ashamed of Delhi's lack of amenities. मुझे देश के बाहर जाकर शर्म आती कहने में कि भारत के राजधानी में घर नहीं मिलता, भारत के राजधानी में गैस सिलेंडर नहीं मिलता। और ये दुर्भाग्य का विषय है कि पिछले 10 साल में कहीं दिल्ली पीछे रह गया। Aam Aadmi Party chief Arvind Kejriwal hit back, accusing the BJP of copying the AAP schemes. मैंने 10 साल पहले कहा था बिजली फ्री कर दूंगा। बीजेपी वाले बोले पैसा कहां से आएगा, केजरीवाल झूठ बोल रहा है। मैंने करी कि नहीं करी आपकी बिजली फ्री? बीजेपी वालों को कहना चाहता हूं, बनिए का बेटा हूं, सारा हिसाब किताब आता है, जादूगर। तुम चिंता ना करो, सारा इंतजाम हो जाएगा पैसे का। Kejriwal claimed BJP workers attacked Aam Aadmi Party workers, women volunteers and journalists, releasing a video to back the claim. पिछले 3-4 दिन से हम देख रहे हैं कि गाड़ियों के ऊपर हमले किए गए, गाड़ियां तोड़ दी गई आम आदमी पार्टी की, कई सारे मटेरियल जब्त कर लिया गया, तरह तरह से हमले किए जा रहे हैं। तो अब जनता ने मन बना लिया, बाकी सारी चीजें एक तरफ, इस बार इनकी गुंडई को हराना है। वो वाल्मीकि समाज के ऊपर में आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि कल वाल्मीकि समाज के हजारों भाइयों ने वहां पे आम आदमी पार्टी का बहिष्कार किया, अरविंद केजरीवाल को वोट ना देने की अपील करी, तो वो उनको गुंडा कहने लग गए, उनको क्रिमिनल कहने लग गए। जो बच्चे Meanwhile, Prime Minister Modi hit out at the Delhi education model in an interaction with students. मैंने सुना है ये दिल्ली में 9वीं कक्षा के बाद बच्चों को आगे जाने ही नहीं देते। जो बच्चे गारंटी है पास होंगे उन्हीं को जाने देते। क्यों? क्योंकि उनका रिजल्ट खराब हो जाएगा तो मेरी सरकार की इज्जत खराब हो जाएगी, इसलिए बड़ा बेईमानी का काम होता है। Congress MP Priyanka Gandhi Vadra hit the campaign trail too for the party. मोदी जी कहते हैं कि नेहरू जी की वजह से ऐसे बहुत काम है जो हो नहीं पाए, कि ये देश रुक गया नेहरू जी की वजह से।
जो कर नहीं पाते फट से नेहरू जी का नाम निकाल के बहानेबाजी शुरू करते हैं कि नहीं। और केजरीवाल जी क्या कहते हैं कि मोदी जी की वजह से काम नहीं कर सकते। ऐसे रोंदू नेता मैंने जिंदगी में नहीं देखे। Who wins power in Delhi, many believe will depend on how the Congress performs. Delhi votes on Wednesday with the results on Saturday. Bureau Report, India Today. With what has been an election, a campaign on steroids, curtains coming down on it. Now, the fate with the voters of the national capital to be decided in just 2 days, the 5th of February, while results, viewers, will come out on the 8th of February. I want to cut across to our 3 reporters who cover the 3 parties who are in this triangular contest on where they deem that they stand on the eve of when Delhi goes to vote. Amit Bhardwaj joining us live from Delhi, Maushmi Singh live from the national capital, Piyush Mishra live from Delhi. I want to cut across to Amit Bhardwaj first. Amit, Arvind Kejriwal till now has shied away from giving out a number. Was it pressure? Was it, that final push, that sense of excitement that made him declare that the Aam Aadmi Party will get 55 and over seats? Preeti, I believe it was more about giving that final push, because so far Aam Aadmi Party did not want its cadre, its candidate and the sitting MLAs to get into this zone of satisfaction. And that is why the AAP insiders were constantly saying that, look, we are sitting on a number of 51 to 55, but we don't want to tell this to candidates right now, because otherwise they'll possibly not put the kind of support that is required in this 2025 battle. Because remember, this is a referendum election. This is an election of litmus test that Arvind Kejriwal has put himself on. So any lethargy in the campaign module would have meant that it could, the cost would have been quite bigger. And possibly that's why Arvind Kejriwal waited till the last moment, till the moment he was wrapping up the campaign for the 2025 Delhi polls. And that's when he said 55 is the number that he is predicting for Aam Aadmi Party. And it was also an appeal, Preeti, remember, because he said it is up to the women voters of the national capital whether they want to give a final push to Aam Aadmi Party or not. And if they do cast vote in support of Aam Aadmi Party, the numbers will go up to 60 seats in Delhi, which the Aam Aadmi Party would want to happen. But the campaign, we can certainly say, in the past 1 week, the Aam Aadmi Party's campaign has been largely static. The BJP's campaign has been surging upwards. And whether the Congress Party has been able to create that confusion in the minority community vote bank is the major concern for Aam Aadmi Party right now. But yes, Arvind Kejriwal putting it out, 55 is the number that he's predicting for the Delhi 2025 campaign. All right, let's bring in Piyush and Maushmi into this conversation. Piyush, the BJP also sensing gain, going all out. You had the Prime Minister also been fielded on the last day of campaign speaking to students. Well, absolutely, Preeti. In the last 5 days, around 200 rallies and road shows, door-to-door campaigns have been done by Bharatiya Janata Party. In the last, if you talk about, in the last 3 elections, for the first time, we have sensed how the BJP is actually in fight this time. We have been talking to various BJP leaders, and they are telling us that we are going to form the next government. The BJP's internal survey tells us that around 39 to 45 seats are there on which BJP is very confident, and they are going to form the government. As far as the 3 big constituencies, New Delhi, Kalkaji and Jangpur are concerned, BJP is saying that they are confident of winning New Delhi and also Kalkaji. They are not very sure about Jangpura, but yes, there is a tough fight there. So around 39 to 45 seats on which BJP is eyeing on. There are various issues on which BJP has this time gone among the people, be it about cleanliness or about electricity, water, free bus services, giving money to women in Delhi. BJP is saying that, okay, you have social welfare schemes, these schemes will continue, but yes, we will ensure that these schemes are implemented properly. We'll have to see which party is going to win over the hearts of people when Delhi votes on 5th of February. Well, you're right. Maushmi, you had Priyanka Gandhi today in the fray, campaigning for the likes of the Kasturba Nagar constituency. What are the chances of the Congress? What are they looking at? Where do they stand?
See, it's very strange, Preeti, because I asked Priyanka Gandhi that 6 months back you were allies and now you are sworn enemies, talking about how Arvind Kejriwal is corrupt and how Aam Aadmi Party is lied through its teeth. So she said, this is politics, at the national front you are different, and at the state front you have different battles to fight. So perhaps the Congress could play the spoiler for the Aam Aadmi Party, and in fact, if the intention is to, revive its own lost ground in the national capital, and that's how, perhaps the Congress is looking at the next few years before the Lok Sabha elections of 2029 to be on a more stronger footing in the India alliance by fighting battles with perhaps allies turned enemies. But interestingly, I would want to throw that question to the viewers and you, Preeti, that Arvind Kejriwal saying Abki Baar 55, is it going to be the same as Abki Baar 400 Par? That's the question that the voters perhaps would answer. All right, I appreciate all three of you for joining us. Because usually the drums have stopped beating. Usually this is supposed to be the silent period. Technically, it is the silent period, but all three of our reporters will vouch this is going to be the time where there will be heavy politicking at the back end, trying to galvanize vote banks, trying desperately to get people who are a little upset with you to move towards your side. Cadre, volunteers responsible for wards, their main time in the sun starts right now. The next 48 hours it is. We're going to keep a keen eye on all developments. Meanwhile, the state of war Delhi in its absolute last leg. On the 5th of February, Delhi will decide. Here are the 5 big issues that Delhi might vote on. Countdown to Delhi poll dangal has begun. From Yamuna to CM House to illegals. Battleground Delhi is heating up. And it's toxic politics over Delhi's lifeline that's dominating the discourse. Arvind Kejriwal did promise to clean Yamuna in his first poll promise a decade back. 2025 was the deadline promised. While he looks for an extension on that promise, the opposition finds the biggest opportunity to corner him. अगर एक मुख्यमंत्री के रूप में मैं और मेरे मंत्रीगण प्रयागराज के संगम में स्नान कर सकते हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं, दिल्ली में आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष से अरविंद केजरीवाल जी से मैं पूछना चाहता हूं, क्या यमुना जी में वह भी अपने मंत्रियों के साथ जाकर के स्नान कर सकते हैं क्या? मैं आज केजरीवाल जी को याद कराने आया हूं। केजरीवाल जी, दिल्ली की जनता आपकी वो विश्व प्रसिद्ध डुबकी की राह देख रही है, कब आप लगाओगे। और अगर यमुना जी में नहीं लगानी है तो कुंभ चल रहा है, वहां जाकर डुबकी लगा दो तो कम से कम झूठ बोलने के आपके जो पाप है वो धुल जाएंगे। Kejriwal has opened a cross-border war with the neighbor. इस तरह से तो 2 देशों के युद्ध के अंदर हम लोगों ने इस तरह के काम देखे थे। देखा गया था कि अमेरिका ने जापान के अंदर नागासाकी और हिरोशिमा में न्यूक्लियर बॉम्ब फेंक दिया था, लेकिन आज जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में आने वाले पानी में जहर मिला के भेज दिया है, मैं बीजेपी को कहना चाहता हूं, इतना मत गिरिए, इस हद तक मत करिए। यही वो यमुना जिस यमुना के अंदर एक कालिया नाग रहता था। From Yamuna to Sheesh Mahal, AAP continuously finds itself on the back foot. Liquorgate allegations were a constant thorn on the side. उन्होंने कहा था कि रिहायशी क्षेत्रों से हम शराब की दुकान बंद कर देंगे। केजरीवाल जी, आप रिहायशी क्षेत्र छोड़िए। आपने स्कूलों को नहीं बख्शा, मंदिरों को नहीं बख्शा, गुरुद्वारों को नहीं बख्शा।
और इस शराब का घोटाला दिल्ली के शिक्षा मंत्री ने किया है। देश भर में कई घोटाले हुए, मगर मैंने किसी शिक्षा मंत्री को शराब का घोटाला करते हुए नहीं देखा। To counter, AAP did what it does best. Announce a slew of freebies in its manifesto. This started a war of promises. The voters in Delhi have 3 baskets of freebies to choose from. हर महीने बिजली के 5,000 रुपए बचा रहा हूं। हर महीने 2 बच्चों की पढ़ाई के 10,000 रुपए महीने बचा रहा हूं। हर महीने महिलाओं की बस यात्रा के 2-2,500 रुपए बचा रहे हैं। इलाज के 5,000 रुपए बचे। 20-22,000 रुपए महीना एक परिवार को फायदा हो रहा है। गलती से कमल का बटन दबा दिया तो दिल्ली में रहने लायक नहीं बचोगे, दिल्ली छोड़ के जानी पड़ेगी। कहां से लाओगे 20,000 रुपए महीना? अरविंद बाबू, आप जब बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि आप खैरात बांट रहे हैं, और हम जब बात करते हैं या माननीय प्रधानमंत्री बात करते हैं या हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष बात करते हैं तो हम संपूर्ण समाज को साथ लेकर समग्र विकास की बात करते हैं, वर्ग विशेष के सशक्तिकरण की बात करते हैं, सुविधाओं के माध्यम से समाज के हर व्यक्ति को खड़ा करने की बात करते हैं। ये आपकी समझ में नहीं आएगा। But all of it is for the voters of Delhi. And that's where BJP has found another issue to pin AAP down. Alleging that illegal immigrants are part of the voter list. Both parties are accusing each other of illegally settling in Bangladeshi and Rohingya voters. दिल्ली की डेमोग्राफी बदलने का काम आम आदमी पार्टी ने किया है। रोहिंग्या और बांग्लादेशी वोटर्स को यहाँ बनाने का काम किया है। इनके विधायकों की मोहर और हस्ताक्षर के बाद ऐसे तमाम लोग पकड़े गए हैं जिनके फर्जी वोट्स बनवाए हैं। लगातार देश के जो रिसोर्सेज हैं उस पे विदेशी कब्जा कर रहे हैं और यही इनका आधार है कि वोटर लिस्ट को मैनिपुलेट करना। बीजेपी की एमपीज के घर से 30-30, 40-40, 20-20 वोट नए वोट बनने के लिए एप्लीकेशंस गई हुई हैं। इलेक्शन कमीशन भी मिला हुआ है, बीजेपी भी मिली हुई है। सांसदों के घरों से 30-30, 40-40 वोट, और डीएम, लोकल डीएम जो है पत्रकारों को उसकी जस्टिफिकेशन देगा, तो चुनाव की प्रक्रिया में सैंक्टिटी कहां बच गई? Which of these poll issues will resonate with the voters? Delhi will decide on February 5. Bureau Report, India Today.